Hello friends, let's understand how to use wait and wait for in a sentence. Let's understand with examples. I'm waiting for a bus. I'm waiting a bus is incorrect. We need to use for with wait. I'm waiting for a bus. यहाँ हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बस के आने का इंतज़ार है, इसलिए वेट फॉर का यूज़ होगा. आई एम वेटिंग फॉर यू होगा यहाँ पर, यानी किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे बस और यू, वहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है वेट के साथ में. ओके, आई वेटेड यू इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पर डायरेक्टली वेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता. ओके, लेकिन जब उसके बाद कोई पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे इंतज़ार किया. I waited for 2 hours is correct. I waited 2 hours is also correct. Wait के बाद for का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. कब? जब उसके बाद कोई period of time 2 hours, a minute, 2 minutes, 2 days, etc. ये होते हैं तब. ध्यान ये रहे कि wait के तुरंत बाद ये period of time आना चाहिए. I waited for 2 hours ऐसे होना चाहिए. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. He waited 2 hours for the train. The sentence is correct. 2 hours is just after wait, so it is correct. We can drop for over here. He waited 2 hours for the train is correct. He waited for 2 hours for the train is also correct. Okay. He waited for the train for 2 hours. It is also correct. Here we use for the train first, then for 2 hours. Okay, but we cannot say he waited for the train 2 hours. This is not correct. When you are using period of time just after wait, you can drop for. Okay, but if you are using the period of time at the end of the sentence, you cannot drop for. Okay, out of these 3 sentences, the first one is rather informal, the last one and the third one is rather more formal, and the second one is less common. Okay, and if you think the video was of any help to you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.